Hello everyone, I'm Dr. Akanksha and you are watching my YouTube channel Golden Life. Welcome back to my channel. क्या कभी ऐसा होता है कि लाइफ में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत? आउट ऑफ टू चॉइसेस और आउट ऑफ मल्टीपल चॉइसेस विच वन इज राइट फॉर यू? आपके लिए कौन सा पाथ सही है? आपके सामने बहुत सारे पाथ होंगे, पाथ ए, बी, सी एंड टी, लेकिन आपके लिए कौन सा सही है? हाउ टू नो दिस? हाउ टू डिसाइड दिस? सी, एवरी पाथ लीड्स टू सर्टेन आउटकम. हर पाथ पे चलने का अपना एक अलग नतीजा होता है, बट आपके लिए कौन सा बेस्ट है? विच वन इज meant फॉर योर हाइएस्ट गुड एंड फॉर योर हाइएस्ट बेनिफिट? If you want to start a new book, if you want to start a new business, if you want to write something, if you want to paint, if you want to make a new music or anything new, and you're not getting that sufficient idea, sufficient motivation, or you're not getting that sufficient energy, or you're not sure where to start from, आपको कहाँ से शुरू करना है, क्या लिखना है? आप बुक लिखने तो बैठे हैं पर आपको वो आइडियाज नहीं आ रहे हैं. आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है पर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, या यू आर स्टक, या यू वांट टू चूज वन प्रोफेशन. आपको चूज करना है आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स. आप क्या करें? आपको खुद में नहीं पता है कि आप क्या करना चाहते हैं. वॉट विल मेक यू हैप्पी और वॉट विल मेक यू सेटिस्फाइड? सो हाउ टू गेट दैट करेक्ट गाइडेंस? आपको कैसे पता है कि आपके लिए जो ये पाथ है वो आप ही के लिए बना है? सी, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. हर इंसान यूनिक है, हर इंसान का पाथ अलग है. सो नेवर ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद अनदर बीइंग. लेकिन आपके लिए वो पाथ है या नहीं? हाउ यू विल गेट सफिशिएंट नॉलेज? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट getting on the right track and stay motivated and get inspired with the correct guidance. अगर आपको ऐसा करना है, if you want correct guidance, then I highly recommend you to connect with your North Star. So this video is all about connecting with your North Star. So let's talk about North Star. So what is North Star? North Star is a bright shiny star in the northern hemisphere in the north sky. It is also known as Polaris, Pole Star or North Star. For generations, this star has been guiding all the sailors and all the merchants in the turbulent ocean. इसने समुद्री तूफान में हमेशा से नाविक को, सेलर को, मर्चेंट्स को रास्ता दिखाया है. Whenever they lost their paths, whenever they lost their track in the ocean, it always guided. For generations, it always guided, and it acted as a navigational tools. लेकिन इसका पर्पस केवल नेविगेशन टूल की तरह नहीं था. इट्स पर्पस वॉज बियॉन्ड दैट. It was meant to guide you, to guide human beings and to all the seekers in their life paths journey. This star was purposely located in the north direction by higher beings so as to guide all the human beings and all the seekers on the planet Earth who want to get sufficient inspiration and sufficient guidance and right energy from North Star. This North Star is located in the midpoint between you and your higher self. Higher self is your soul. Basically, the higher aspect of your soul is your higher self. I'll make a separate video about higher self. What is this? So this star is purposely located in the midpoint between you and your higher self. If you're not able to connect with some other beings, or if you're not able to connect with the source consciousness, or if you're not getting अगर बाकी चीज़ों से कनेक्शन डिफिकल्ट हो रहा है, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद नॉर्थ स्टार बिकॉज इट्स पर्पज इज टू गाइड यू. इट्स पर्पज इज टू शो यू द पाथ इन द डार्कनेस, इन द मिड्स ऑफ द टर्बुलेंट ओशन. इट्स पर्पज इज टू गाइड you and to show you right track. And trust me, it will always show you what you want and what is for your highest good. आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, ये हमेशा से वो चीज़ गाइड करेगा. So I highly recommend you to connect with your North Star once you want to start something new, or if you're not satisfied in your life and you deeply feel that something is lacking. What should you do? आपको क्या करना चाहिए that you should be on your right track. So I highly recommend you to connect with your North Star. So here are certain tips that I would be sharing you my perspective about North Star. So let's see how to connect with your North Star.
मैं आपको बहुत बेसिक से टेक्निक्स और टिप्स दूंगी जिससे आप बहुत ईजिली आराम से नॉर्थ स्टार से कनेक्ट हो सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट और एनी न्यू स्टार्टअप और एनी न्यू बिजनेस। अगर आपने इंटेंशन ही बना लिया है, दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ। इंटेंशन इटसेल्फ इज ए वेरी पावरफुल टूल। अगर आपने इंटेंशन बना लिया है दैट यू वांट टू कनेक्ट विद योर नॉर्थ स्टार, आप नॉर्थ स्टार से बात कर सकते हैं। सुबह या शाम का 5 या 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड आस्किंग नॉर्थ स्टार टू गिव यू गाइडेंस, गिव यू मोटिवेशन एंड गिव यू सफिशिएंट इंस्पिरेशन। If you set your mind intentionally, if you set your mind that I am connected with my North Star and my North Star will now lead me and guide me towards my highest good or towards the correct decision or towards the right choices, that would be sufficient enough. So first and most important technique is intention itself is sufficient. Second technique, if you can place some of your furnitures in the north direction, आप अपनी वर्किंग डेस्क को नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हैं, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आप कुछ लिखते हैं। इफ वेयर यू आर मेकिंग जर्नल्स, जहाँ पे आप पेंट कर रहे हैं या कुछ भी आइडियाज ले रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा क्रिएटिविटी वाला काम कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज फेस योर सेल्फ इन द नॉर्थ डायरेक्शन। दैट विल ऑटोमेटिकली ट्यून यू टू द नॉर्थ स्टार। सबकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑटोमेटिकली आपको ट्यून कर देगा नॉर्थ स्टार से, वो ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट कर देगा नॉर्थ स्टार से। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट टेक्निक इज facing towards north star. You can put some of your furnitures, you can arrange some of your furnitures in the north direction so that you get that light, that inspiration and guidance from north star. Third important technique is, if you do meditation on a regular basis and if you know how to get into that meditative state, sit down, calm your mind. आप आराम से बैठिए, पलथी मार के, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके आप बैठिए। टेक डीप ब्रेथ्स, आप आराम से अपने आप को शांत करिए। टेक 9 to 10 डीप ब्रेथ्स, क्लोज योर आईज, टेक 9 to 10 डीप ब्रेथ्स, इनहेल एंड एक्सहेल। After 9 to 10 deep breaths, start imagining that there is a bright shiny star in front of you in the sky, or you can imagine it in front of you, जैसा भी आपको लगता है। Once you imagine that white, bright, shiny star in front of you, now you start imagining. See, imagination is the language of mind. Whatever you imagine comes true and this is true. ये सिर्फ कहने सुनने और साइकोलॉजी की बात नहीं है। You definitely connect whenever you imagine and connect yourself to something, you naturally and you 110% you are connected with that thing. Okay, so don't underestimate the power of imagination. Okay, so now take 9 to 10 deep breaths. Start imagining a bright shiny star in front of you. Now you can imagine it like this way. आप ये ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ब्राइट सा स्टार आपके सामने है। जितने बड़े आप हैं उतना बड़ा ही एक ब्राइट स्टार है आपके सामने। नाउ यू कैन इमेजिन दैट ब्राइट स्टार, you can start talking to that north star, you can start connecting to that north star, and you can say that, hey north star, I want to connect with you so that I can get sufficient guidance, inspiration and motivation. Now you start imagining that white bright shiny star start coming and merging with you. That star is coming and merging with you. That star has been merged with you. वो स्टार आपके साथ जुड़ गया है। Now you start taking that energy of white star. आप इमेजिन करें कि आपकी पूरी बॉडी में that white light of north star is there. You're absorbing that white light of north star. आपकी एक एक सेल, एक एक चीज में you are getting that energy. This is the technique number 3. Once you are getting that energy, you are connected to the north star. Next technique is, sit down, calm down your mind, take 10 to 11 breaths, most probably 10 breaths. Now imagine that there is a bright shiny star in front of you in the northern sky or in front of you. इमेजिन करिए कि उसके कोर से हर एक प्लैनेट का, हर एक स्टार का एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि उसका हार्ट होता है, जो कि उसका कोर होता है। Now start imagining that a golden light is coming from the core of that north star and it's hitting you here in the third eye chakra. Golden light
नॉर्थ स्टार से थर्ड आई चक्रा पे आ रही है. टेक डीप ब्रेथ. दिस गोल्डन लाइट इज कमिंग. यहाँ से ये गोल्डन लाइट इज गोइंग डाउन टू योर हार्ट सेंटर, टू योर हार्ट चक्रा. From this center, from this heart chakra, this golden light is again going back to the core of the North Star. Now you have made a triangle, a sacred geometry, a sacred pattern of universe. आप इमेजिन करिए गोल्डन लाइट नॉर्थ स्टार से आपके थर्ड आई चक्रा सेंटर इन द पीनियल ग्लैंड, मोस्ट सेंटर पोर्शन में ये आ रही है. इट्स गोइंग डाउन टू योर हार्ट सेंटर एंड देन गोइंग बैक टू द कोर ऑफ द नॉर्थ स्टार. And start imagining that this loop or this triangle is circulating. ये जो loop जो connection बन रहा है ये fast होता जा रहा है. At this point, now you are connected with your North Star. Another technique is, if there is a North Star in front of you, imagine it that there हर एक planet is a being. हर एक planet के चक्रास हैं. This North Star is also having a third eye chakra. Okay, so now start imagine it कि आपके थर्ड आई में, इन द कोर ऑफ द थर्ड आई में देयर इज bluish gray tint of energy is there in the middle of your third eye, and the same blue gray energy is there in the North Star's third eye. नॉर्थ स्टार के थर्ड आई में भी वो ब्लू ग्रे कलर की एनर्जी है, का गोल्डन एनर्जी है, और आपके थर्ड आई में भी वो ब्लू ग्रे कलर की गोल्डन एनर्जी है. नाउ स्टार्ट इमेजिनिंग दैट अ गोल्डन लाइट इज कमिंग फ्रॉम योर थर्ड आई चक्रा, फ्रॉम द सेंटर. आपने जो सेंटर में इमेजिन किया है ब्लूइश ग्रे कलर का जो एनर्जी इमेजिन किया, उसको लूप बनाते हुए से 8 के डायरेक्शन में जाते हुए नॉर्थ स्टार के थर्ड आई को कवर करते हुए इट इज अगेन कमिंग एंड गोइंग बैक टू नॉर्थ स्टार. सो वी आर मेकिंग अ इन्फिनिटी सिंबल. एक इन्फिनिटी सिंबल पे नॉर्थ स्टार है, एक इन्फिनिटी सिंबल पे आपका थर्ड आई चक्र है, एक इन्फिनिटी सिंबल पे नॉर्थ स्टार का थर्ड आई चक्र है. यू आर मेकिंग अन इन्फिनिटी सिंबल और सिंबल 8 बना रहे हैं अपने थर्ड आई पे और नॉर्थ स्टार के थर्ड आई पे. स्टार्ट इमेजिनिंग. Take deep breaths and now start working with this. At this point, you are connected with your North Star. So, intention is sufficient itself. If you are making intention, that is sufficient itself. You can talk to your North Star. You can ask North Star. Then you can put your furnitures in the north direction where you can face towards north direction, and you can make journaling or creative ideas in the north direction. Then take deep breath. You can imagine a bright white star in front of you. Start absorbing that. आप ऐसा imagine करिए कि वो merge हो चुका है and you are receiving all the energy from North Star. Or you can make sacred triangular का geometry बना सकते हैं, और a pattern of infinity. आप infinity का symbol बना सकते हैं थर्ड आई से थर्ड आई कनेक्ट करने का. ये कुछ बेसिक से टिप्स हैं. Once you are connected with your North Star, क्योंकि आपने पहले कभी एनर्जी वर्क किया नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा कि हाउ वुड इट फील. आपको कैसे पता है कि आप कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड हैं. आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. वंस यू आर कनेक्टेड विथ योर नॉर्थ स्टार, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू योर नॉर्थ स्टार. आप लिखना शुरू कर सकते हैं डायरी पे. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर नॉर्थ स्टार. And you can tell North Star where you are lacking. आपको कहाँ पे गाइडेंस चाहिए. यू कैन आस्क नॉर्थ स्टार. यू कैन जैसे मैं आपसे बात करी, जैसे आप किसी से भी बात करते हैं, यू कैन टॉक टू नॉर्थ स्टार एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग जर्नलिंग, और यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड यू कैन आस्क, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस फॉरवर्ड. आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा हाईएस्ट पाथ है, प्लीज शो मी गाइडेंस. विच पाथ शुड आई गो आउट ऑफ सो मेनी चॉइसेस. मुझे क्या करना चाहिए. इज इट राइट फॉर मी और नॉट. Once you are connected with your North Star, you will see that you automatically align yourself in your right direction. आप ये नोटिस करेंगे, आप ये रिचुअल बनाएंगे, प्रैक्टिस बनाएंगे 5-10 मिनट्स इन मॉर्निंग और इन इवनिंग. आप ये देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली अलाइन हो रहे हैं टूवर्ड्स योर पाथ एंड टूवर्ड्स योर गोल. You will suddenly land up to right person,
यू विल सेड आप रैंडमली किसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे आपको गाइडेंस मिलेगी. सी, वंस यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन टू द यूनिवर्स, आंसर इज बाउंड टू कम बैक. अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर मिलेगा. इट्स अप टू यू हाउ टू रिसीव दैट आंसर. समटाइम्स दिस आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक. कभी आप म्यूजिक सुन रहे हो और आपको सडनली कोई आइडिया आ गया, या आप टहल रहे हैं, आपको सडनली कोई आइडिया आ गया. यू सडनली स्टार्ट नोटिसिंग थिंग्स. So it is the law of universe. Once you ask any question, answer is bound to come back to you. आपने नॉर्थ स्टार से क्वेश्चन किया है, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा. आप देखेंगे कि आप रैंडमली किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं या पहुंच गए हैं जहां पे आप पहले कभी नहीं गए, एंड यू आर गेटिंग आंसर फ्रॉम दैट पॉइंट. आपको खुद से आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा. यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि यू आर बम्बार्डेड विथ आइडियाज. कुछ बुक लिखना है, कुछ क्रिएटिविटी लिखना है, यू कनेक्ट विथ योर नॉर्थ स्टार, यू विल रिसीविंग सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, यू कैन स्टार्ट योर न्यू बुक, you can start painting, you can start writing. So this video is all about connecting your North Star, and this is very crucial क्योंकि once you are connected with your North Star, you would always be guided, you would always be on your right track, right path, and once you are on the right track, then obviously you would lead a more successful and happy life. You'll find that your whole world has been shifted. You'll automatically start shifting your whole world. You will start shifting your mind and your perspective. आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगेंगे टुवर्ड्स योर हाईएस्ट गुड. आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको स्टक करके रखे हैं और जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं. You will start noticing that you will get that guidance to come out of that stuck energy. You will get that sufficient knowledge. So this is very important video, and I highly recommend you, everyone out there, all my listeners, to start connecting with your North Star, as it is very crucial in your manifestation tool. If you want to manifest a beautiful life, then this is highly recommended to connect with your North Star. So this is all about today's video. If you have any query or any doubt, you can always write me up, you can always comment me down, and you can always ask me, and I would definitely try my best to guide you and to help you out. If you like my video, please like it, subscribe it, and share it to the one who is needy and who wants to have that sufficient guidance and motivation from my video. And yeah, that's it. So see you in my next video. Bye.